Hello student. So oxidation and reduction we have already completed. So here we will see about the redox reaction. Redox means reduction plus oxidation. ओके तो यहाँ पे दोनों होगा, रिडक्शन भी होगा ऑक्सीडेशन भी होगा एंड इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ सी व्हाट इज द डेफिनेशन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. ठीक है, दोनों ही लेंगे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे. नाउ सी सम एग्जांपल. CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गिव्स Cu कॉपर प्लस H2O वाटर. तो यहाँ पे कहाँ पे रिडक्शन हुआ एंड कहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है. वेयर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस when hydrogen is removed then it and oxygen is added, then it gives oxidation reaction. See here, hydrogen is removed and in hydrogen one oxygen is added. ठीक है, तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड होगा हम लोग को क्या ध्यान रखना है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. जहाँ पे हाइड्रोजन या जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा. सो सी, in hydrogen the oxygen is added, so this is oxidation, and in CuO the oxygen is removed here, so this is your reduction reaction. Okay, so in this example reduction and oxidation take place simultaneously, so this is redox reaction. Now see the another example. MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O. तो जहाँ अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट देखेंगे. ओके, नाउ सी हियर, फ्रॉम दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. ओके, and when hydrogen is removed then it is called oxidation reaction. So here the oxidation is taken place. Okay, now see MnO2 and from here and it gives MnCl2. Okay, so from here oxygen is removed, so this is reduction reaction. Okay, so in this example also the reduction and oxidation reaction take place simultaneously, so this is the example of redox reaction. Okay, now see the another type of chemical reaction, and this is the last type of chemical reaction, the exothermic and the endothermic reaction. Okay, and both are related to each other, so we will see both. Okay, now see what is exothermic reaction. In exothermic reaction evolution of heat take place. Now see, in exothermic reaction the evolution of heat take place, or we can say that combustion is taking place here. Okay, and in endothermic reaction absorption of heat is taking place, or what is the another name of endothermic reaction, hypothermic reaction. ओके, तो यहाँ पे क्या होगी, हीट रिलीज होगी और यहाँ पे हीट क्या होगी, ऑब्जर्व होगी. ओके, सो इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज एंड इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज ऑब्जर्व्ड. ओके, हीट इज रिलीज एंड हीट कंज्यूम्ड हियर. नाउ सी द एग्जांपल of endothermic reaction. Exothermic reaction, sorry, CH4 plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus heat. What is CH4? Methane. Okay, when methane is react with oxygen then it gives carbon dioxide, water and heat is released here. अगर हमको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि whether the heat is released or whether the heat is consumed, तो अगर हमको सिर्फ एग्जाम्पल से जाना है तो देखो, अगर हीट प्रोडक्ट के साइड लिखा हो देन दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट रिएक्टेंट की तरफ लिखा हो देन दैट्स योर एंडोथर्मिक. Example of endothermic reaction. Okay, now see, methane when react with oxygen then it gives carbon dioxide, water and heat. Heat is released here, so this is the example of exothermic reaction. Now see the another example, magnesium plus oxygen give magnesium oxide. This equation is not balanced. Okay, both the equations are not balanced too, so you will balance it. Now see, Mg when magnesium when react with oxygen then it gives magnesium oxide and heat is released here. Okay, so this is your exothermic reaction. Now see some examples from endothermic reaction. HgO, what is HgO? Mercuric oxide. Okay, Hg is for mercury, so mercuric oxide when react with heat, when you apply some heat here then it gives mercury plus oxygen is removed.
ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट देखो किस तरफ है, in the reactant side. Okay, so up to here we have completed. Thank you so much. If you have any doubt, then comment it. Thank you so much.